in this question we have to find the zero of the polynomial in each of the following cases. So this is part number fifth, right? So a polynomial px is equal to 3x is given here, right? And we have to find out the zero of this given polynomial. Okay, so to find zero of the given polynomial, what we have to do? Equate given polynomial to zero, right? So to find zero of the given polynomial, राइट, हम क्या करेंगे? हमें पॉलिनोमियल पी एक्स गिवन है, इसको हम जीरो के इक्वल कर देंगे, राइट? इट इम्प्लाइज in in the place of px we can write 3x, right? Because it is given in the question that px is equal to 3x. So in the place of px we can write 3x is equal to 0, right? अभी हम यहाँ से क्या करेंगे? वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? सो यहाँ पर देखो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में 3 इंटू एक्स है, हम क्या करेंगे? x 3 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, ओके? सो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0/3, राइट? एंड 0/3 इज नथिंग बट 0, राइट? सो यहाँ से हमें वेरिएबल x की वैल्यू मिल गई है 0, राइट? और यही हमारा क्या है? दिस इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल px, राइट? हेंस x is equal to 0 is a zero of the given polynomial, right? So this is the solution of this question.